Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I think and believe that the word hate will be the most trending word, most used word in our generation because we love to hate. I'm not included in that we, by the way. You all love to hate, not me. I still मतलब मेरे को समझ नहीं आता है. इंटरनेट पे आधी चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि मुझे समझ नहीं आता कि हेट क्यों किया जा रहा है. एंड बिफोर एनीबडी ट्राइज टू कॉल मी आउट ऑन द माचा रील, I never intended to hate on matcha. I even wrote it in my caption that I'm going to try out matcha someday, which I will. That reel was about the fact that every reel on my For You page has matcha. I don't hate matcha. So yeah, please keep that to yourself if you were about to comment that. Except that, yeah. So I just feel like everybody hates everybody. मतलब इतना casual हो गया ना hate. हर दूसरी रील में कोई किसी चीज़ पे हेट कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये जो कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं जो दूसरे के कंटेंट पे हेट करते हैं. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, especially the fashion person. Oh my god, he's insufferable. I can't believe he made a career out of this. You all follow anything, yaar. Anything algorithm feeds you, you follow that. I'm sorry, like I can't believe he's famous. Whatever. This is not a rant about him, but in general, every reel is about hating somebody else. There are a lot of content creators except him. He judges people's fashion, but a lot of people just judge other people's reels. Like they will किसी बैकग्राउंड में किसी की रील चल रही है, ग्रीन स्क्रीन पे ये इंसान आके इस रील पे कमेंट्री दे रहा है, इस रील को हेट कर रहा है हर दूसरी रील पे. और अगर ये नहीं है तो कोई अच्छी रील भी आ रही है, उसके कमेंट सेक्शन में हर दूसरा कमेंट हेट कमेंट है. तुम खुद एग्जॉस्ट नहीं हो जाते by consuming this content or by creating this this kind of content? Like genuinely, do you not get exhausted? Where do you find the energy? Where do you find this energy from? कि ये क्या पहना है इसने, ये क्या बोल दिया इसने, ये कैसा मेकअप है, ये कैसी स्कर्ट है, ये कैसा फोन है. How do you get the energy to do all of this, यार? How? I am genuinely like confused. कहाँ से आ रही है इतनी हेटर एनर्जी? क्यों आ रही है? क्या बिगाड़ा है दुनिया ने तुम्हारा कि तुम दुनिया को बिगाड़ने चले हो यार? क्यों कर रहे हो इतना? Instagram, it has been so negative lately. Everybody, या तो ब्रेन रॉट या तो सुपर ब्रेन रॉट कंटेंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या चल रहा है. मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं आते हैं. I can't even think of the brain rot content that is going on because I don't know how to pronounce half of those words. जो भी चल रहा है, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं यार, कुछ भी ट्रेंडिंग हो रहा है, वो क्रोकोडिलो वगैरह एंड ऑल दैट. एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, shout out to Ved Madison, he told me that that trend is actually problematic in a way. Like, I actually don't remember how it was problematic, but it is problematic. If you want to know about it, comment. I will reply. I'll probably like go back to our chat and see what's problematic in that. But like a lot of shit is problematic in itself, and people are just like trend. क्या कर रहे हो? Where is normality? Where is just being nice? Like, where did your personality go? Now half of the people are like, my personality is hating. That's not something to be proud about. That's not something to be proud of. क्या बोल रहा हूँ? That's not something to be proud about, यार. Is this sentence correct? I don't know. My English teacher is like banging her head in the wall while watching this video probably because मैं इतना fuck up कर रहा हूँ. I am just nervous in front of camera. और मुझे नहीं, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो क्या हो गया? I need to make a video on this also. How people treat you when you don't know good English. Like, you live in India. English is not even our language. Whatever, sorry. Yeah, haters, please, what are you doing? Get a life, get therapy, and be nice to other people. And if you can't be nice to other people, don't hate also. Why do you hate everything? Somebody will comment, I hate this bottle that you're holding. Okay, I don't care. Stop commenting bad things on my videos or other people's videos. Like, I'm genuinely sick of it. जहाँ देखो कोई घटिया कमेंट है.
कोई अच्छा कोई, मैं बहुत रेयरली किसी का कमेंट सेक्शन खोलता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। हर कमेंट मतलब कुछ भी कमेंट सेक्शन होगा हमेशा एल कमेंट सेक्शन ही होता है। मेरी कभी कोई रील आपने देखी होगी तो जहाँ पे मेरा कमेंट होगा, आधी रील्स में तो मैं यही कमेंट करता हूँ, एल कमेंट सेक्शन, एल कमेंट सेक्शन, बिकॉज हाफ ऑफ देम आर एल कमेंट सेक्शन। एवरीबडी इज जस्ट हेटिंग ऑन द पर्सन फॉर समथिंग। Why? My question is why and for what? That is all. Like I'm genuinely so confused. What is going on? Like क्या मिलता है? What kind of gratification are you getting by hating on other people or other things or anything that is existing? Oh, I hate this. Oh, I hate that. I hate this color. I hate that. Nobody cares. The color does not care that you hate it. The movie does not care that you hate it. So just stop hating. Like saying I don't like this or I dislike this is very different from hating, okay? I'll make that also a point. If you dislike a movie, that is fine. That's like okay to have an opinion and choice of the content that you consume. If you dislike this video, if you do a thumbs down, valid. I will never call you out on that. Yes, you don't like this video. If you comment also I don't like this video, I'll be like okay, good. ठीक है, आपने अपना ओपिनियन देना था, मैंने किसी ने पूछा नहीं बट आपने दिया, बट स्टिल इट्स फाइन टू से दैट यू डिसलाइक द वीडियो. बट इफ यू से आई हेट द वीडियो, दैट्स डिफरेंट. लाइक यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू दैट. यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा लाइक अरे मैं लिखता हूँ इसको, आई हेट दिस वीडियो. इसका दिन खराब करते हैं. किसी का दिन खराब करने ही रहे हो वैसे, क्योंकि नोबडी केयर्स अबाउट योर ओपिनियन. बट समझ रहे हो, सम पीपल केयर एंड देन उनका दिल दुखता है. And I don't want people's dil to dukh. Because why is dil dukhing? I don't know what I'm saying now. Okay, bye. Please like, share, subscribe, comment. और आप लोग लिख रहे हो कि मेरा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है. अभी मुझे कॉलेज जाने दो. How will I record in college? I have to room with like 2 other people. How will I like मैं कैसे बोलूँगा, कैसे कॉलेज. Let's talk about college in some other video. Yeah, bye bye. See you later.